Hey, Assalamu alaikum. Can I get a confirmation if I'm clearly audible? वालेकुम सलाम जी सर, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। Okay. Can we see the participants also, those who have joined the session? जी सर, यहाँ पे जूम पे अभी ज्यादा नहीं है। वी हैव अबाउट 3 अटेंडीज जो कि आपके नीचे बॉटम पे अगर आप देखेंगे लेफ्ट पार्टिसिपेंट्स में आ रहे हैं। टोटल आर 6 और फेसबुक पे हमारे पास जो है वो देयर आर अबाउट 12 पार्टिसिपेंट्स ऑन फेसबुक फॉर नाउ, व्हिच विल इंक्रीज इंशाल्लाह इन अ बिट। Okay, so do you think we should give it another couple of minutes and then start, because our time normally 5 minutes wait is quite normal. जी श्योर। Thank you. सर आई थिंक वी कैन स्टार्ट इफ यू रेडी। फेसबुक वगैरह पे दूसरे प्लेटफॉर्म पे हमारे पास व्यूअर्स इंक्रीज हो गए, तो देन एज विल गो तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास फिर यहाँ पे बढ़ जाएंगे और बाकी फिर जो है रिकॉर्डिंग वाले जो है रिकॉर्डिंग पे देख लेंगे। Ji, wonderful. Thank you very much. So we'll start this webinar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everybody. Thank you very much for taking the time out and joining in. Today's webinar is part of that week-long activities planned, in the capital market. And I'm sure abhi tak aapka
you must have attended few of the related webinars जहाँ पे हमारे कुछ colleagues ने आपको e-services के बारे में बताया होगा, और भी कुछ चीजें आने वाले एक दो webinars में होगी. So I'm very happy to be part of this initiative. मेरा नाम जवाद हाशमी है जी, and I look after the trading and track affairs function of the exchange, Pakistan Stock Exchange. फ्लायर से आपने देख ही लिया होगा कि आज का हमारा ये जो सेशन है, that is about Sahulat account, which is a variant of account, a trading account used at for the purpose of buying and selling of shares. It has certain features which we would certainly talk about at length, and how does it really fit into the overall suite. इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा एजेंडा आपको मजीद थोड़ा सा बताऊं. I'll just share some facts, some numbers with you, and we'll try to get some inference out of those numbers, and then we'll establish a case, and we'll share with you that what have we done to address certain areas. And then, getting on to Sahulat account, that how does it fit into this equation so well? And in the end, we'll talk about, what's an offer, because the purpose of opening okay. Sorry, there's because you need to sometimes look at the chat side also. So I'm sorry for this pause. So once we talk about Sahulat, how does it fit into the overall suite available, and then we'll talk about what's an offer at PSX, because the ultimate objective of opening an account is to get yourself acquainted with the capital market functioning and the trading and investment routines in order to target good returns in a variety of products offered at Pakistan Stock Exchange. So उस पे भी हम थोड़ी सी बात करेंगे. I hope I'm clearly audible. कोई मसला हो, कोई issue हो, तो please do write in the chat, and I'll try to adjust accordingly. और दूसरा ये कि yes, we do have a Q&A in the end, but since the theme of this this series is to have an interactive session, so please keep asking your questions, keep sending in your queries during the session, and we'll try to answer whatever we possibly can. Else we will certainly get back to you. Leave your contact with us. So let me just share the screen with you with a small presentation here. I hope this is really visible. Okay, good. So the agenda for the core point we are talking about today is Sahulat account, and what are the benefits in there, and how do we get started. But उससे पहले थोड़ी सी जैसे मैंने बताया, I will touch upon some of the numbers. Well, all this stuff is readily available on a click, but just to get some inference out of it. So we have a population of over 220 million, with over 60% below the age of 30. So we have quite a young population, who's tech savvy, who's exposed to a lot of information, who are internet users, all that stuff. The younger people certainly know more about the technology and all these gadgets, comparing with the people of say my age.
At the same time, there's a table shown in here जिसमें investing population के comparison है. इसमें आप देख रहे हैं country wise हमने कुछ regional markets उठाई. पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ से ज़्यादा है और हमारी investor population जो है इस वक्त registered investors जो हैं वो कोई 2,60,000 के करीब. इंडिया में ये percentage आपके सामने है. There are about 20 million. Then China, as you can see. So in terms of the investor population in comparison to the total population, अगर आप देखेंगे तो these markets, neighboring markets, 1.67 in India, 12.6 China, even Indonesia is 0.61, whereas we are ranked, not in a very great comparison with only 0.12. And so we analyze this और हम इस पे काम करते रहते हैं. इसमें बहुत सारी structural चीजें हुई हैं over the period और उसमें जो how to address this dichotomy, I would say, कि इतनी अच्छी population, I mean this is the young population and why we have इतना छोटा investor base हमारे मुल्क में. तो उसकी कुछ वजूहात हमने आइडेंटिफाई की और हम उस पर ऊपर काम करते रहते हैं. उनमें से एक दो वजूहात जो हैं वो लिंक हैं आज के टॉपिक से. उस पे मैं थोड़ा सा आपको बता. ये फर्दर थोड़ा सा डेमोग्राफिक्स के ऊपर के 60 मिलियन इंटरनेट यूजर्स, ग्रोइंग एट a 20% रेट. इंटरनेट पेनिट्रेशन हमारी जो है that is very encouraging. Still on its upward trend. Mobile connections and the kind of increase, so over 75% of the total population has the access to the. I mean, do have the mobile connections. So that I'm just setting the stage for the later. So key initiatives जो हमने लिए, जो हमारे पास मसाइल generally feedback आती थी, वो ये कि हमारा account opening process जो है that is quite lengthy and at times a lot of information and a lot of complexities were there. So उसमें एक तो key initiative ये हुआ कि हमने अपना जो account opening form है उसको simplify किया, उसको shorten किया. अब एक ज़माने में 16-17 pages का होता था. Now it has come down to only 3 pages with key information and documentation. इसी साल के आगाज में ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग भी इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें यह है कि आपके जो कस्टमर्स हैं, I mean the investor can come on board, open an account electronically without signing the documents or visiting the brokerage house. ये हो गया. एक और बड़ा इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव with the help of State Bank हम उस पे काम कर रहे हैं, which is the possibility of sharing KYC information between the banks and the brokerage firms. So मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इन initiatives के साथ को लेते हुए हमने उन एक दो की एरियाज को एड्रेस करने की कोशिश की है एंड अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिटर्न इज it is visible now. और हमारी जो इन्वेस्टर पॉपुलेशन है that has been increasing since last year, and especially after the introduction of this online account. So now, what is Sahulat? As the name suggests, Sahulat is about facilitation. Sahulat एक आसानी का नाम है. तो ये एक ट्रेडिंग अकाउंट है जिसमें KYC के इंफॉर्मेशन बहुत ही सिंप्लीफाइड है और इसके अंदर I mean it is primarily offered for the low risk investor category, because stock exchange, as you know, it provides you at times better than the average returns, but at the same time it does carry certain risks. So for an investor who's at the who's just trying to get himself acquainted with the stock market, uske liye it's a very low risk category account
जो इंट्रोड्यूस किया है। इसका key benefits यही हैं कि as I said, it's an easy entry into the market, so you don't get through all that detailed documentation in terms of एक दो डॉक्यूमेंट्स का मैं खास तौर पर जिक्र करूंगा कि जैसे आपकी सोर्स ऑफ इनकम है, उसका प्रूफ जो है वो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। आपका प्रूफ ऑफ रेसिडेंस एक होता है, समटाइम्स पीपल find it difficult to produce it. I mean, if you are doing a business online or e-commerce or something, I mean, it's difficult to sometimes produce all those documents. And even if when you produce, I mean, it normally takes a little longer for to come on board. इसके अलावा इसमें हमने जो it has a good 800,000 limit, जिसके अंदर आप रहते हुए अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं। Onboarding, it's completely digital, and then once you get onboarded, we have a variety of brokerage houses who are offering very I would call it state-of-the-art trading platforms to its investors to seamlessly execute their transactions. Plus, they provide the call center support also. And I would specifically mention here that this category aligns well with the Asan digital account जो State Bank ने अभी recently introduce किया है। इससे effectively ये हो रहा है कि आप, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए आपके पास एक बैंक अकाउंट होना जरूरी है और बैंक अकाउंट के अपने रिक्वायरमेंट्स हैं, तो ये जो आसान डिजिटल अकाउंट है इसका ये बिल्कुल कंप्लीटली डिजिटल आप इसमें इसको खोलते हैं। और मैं प्लीज अलाउ मी टू से दैट कि आसान डिजिटल अकाउंट विद सहूलत अकाउंट, दैट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। Why? Because you can open a bank account and the brokerage account without having been, seen any branch or visited any branch. कोई documentation आप paper form में नहीं है. It's all digital. So I think that's a great combination. ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस इस स्लाइड के ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। इसमें ये है कि all you do is you access the broker's website, enter the basic information, and then you get an OTP for the verification. Once you by putting that OTP डाल के आपके पास एक फॉर्म विजिबल हो जाता है जिसमें आप अपनी बाकी की इंफॉर्मेशन उसके अंदर एंटर करते हैं। फॉर्म सबमिट होता है, NCCPL, which is the National Clearing Company of Pakistan, who opens the UIN, वो उसको रिव्यू करती है, finds it okay, and then account gets created and your trading gets started. So literally, at best, if everything is all the information is completely provided, it literally takes few hours to come on board and transfer the funds and get started. इसमें जो नीचे एक छोटा सा टेबल है requirements, so उसमें imagine this is the kind of information जो आपको which is very basic, कोई खास चीज नहीं है इसके अंदर. The only document is your national ID card that you need to provide. Rest all is only information. Documents आपसे नहीं मांगे जाते. Biometric वो जो होता है verification, that is also exempted for this account. And effectively, for all online accounts opening these days. Now, so this was the process, and with Sahulat account, that makes this process even quicker. Because बैंक अकाउंट तो खुल गया, लेकिन ब्रोकरेज अकाउंट खोलने के लिए आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। सहूलत अकाउंट में एक CNIC से आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं, ब्रोकर को सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड देन उसको स्टार्ट कर सकते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि देखिए, ऑल्दो दिस स्टॉक मार्केट बिजनेस इज वेरी
it's talk of the town. Har banda, if you talk to anybody, he's interested in getting to know more about this business. But problem ये होती है कि how to make an entry, how to get in there. So ये जो सहूलत account है, that primarily is targeted at the new entrants. इससे आपको एक आपका risk भी limit हो जाता है, because you cannot trade beyond certain amount, which is 800,000 at the moment. You can keep it as low as you wish. और उसमें आप trade करते हुए you get yourself familiar with the stock market, and once you are ready to get to the next stage, simply update your documents with your concerned brokerage house, और आप नॉर्मल अकाउंट में आ जाते हैं. उसमें फिर जाहिर ये होता है कि नॉर्मल अकाउंट में लिमिट्स एनहेंस्ड हो सकती हैं. उसके अंदर मार्केट्स और सारी आपको डेरिवेटिव्स और लेवरेज प्रोडक्ट्स वो ऑफर हो जाती हैं. तो सहूलत इज अ गुड प्लेटफॉर्म टू बिगिन विद, और इसको अगर डिजिटाइज वे में करें तो इट्स इवन वेरी इजी. आजकल बहुत सारे हमारे जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं, they are offering mobile apps for trading, desktop applications which are quite convenient. They also offer the research for you to take an informed decision. So all this I mean the point which I'm trying to make is that it makes a great sense for the new entrants to try out this business. Now, when I say try out this business, and the next question would be, okay, so based on what? I mean, what's an offer? So I will just talk about the opportunity. वो कहते हैं ना कि what's in it for me. So किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने के लिए आप उसका हिस्टोरिकल रिटर्न्स को देखते हैं, आप उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को देखते हैं. तो मैं आपके सामने बहुत क्विकली कुछ चंद एक नंबर्स आपसे शेयर करता हूँ. PSX के अंदर, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो KSE 100 इंडेक्स है, 15% एनुअल एवरेज रिटर्न्स इन द पास्ट 10 years. So it's quite reasonable return over this period of time. 10 साल एक मुनासिब अरसा होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए. इस वक्त हमारे पास 530 से ज़ायद कंपनीज जो हैं वो लिस्टेड हैं. करीबन आई थिंक लेटेस्ट नंबर इज 534 के करीब, बिकॉज we have listed 3-4 new companies over the past few months. इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये है कि 226 कंपनीज जो हैं वो शरिया कंप्लाइंट हैं. तो जब आप ट्रेड करना चाहें, तो अगर आपकी प्रेफरेंस है शरिया कंप्लाइंट शेयर्स में ट्रेड करने के लिए, तो उसकी भी वो भी मौजूद है. कुछ मार्केट कैपिटलाइजेशन के नंबर हैं, इन्वेस्टर्स की पॉपुलेशन का नंबर है. मोर इम्पोर्टेंटली देयर आर 204 एक्टिव ब्रोकर्स हु आर ऑफरिंग ट्रेडिंग सर्विसेज टू द क्लाइंट्स, और जैसे मैंने कहा कि आप इनके साथ ऑन बोर्ड हो सकते हैं. ओपन योर ब्रोकरेज अकाउंट एंड देन यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग. थोड़ा सा और देख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस. तो 10 साल का जो रिटर्न है इसमें KSE 100, ये डॉलर टर्म में मैं आपको बता रहा हूँ. प्रीवियसली जो पिछली स्लाइड थी दैट वाज ऑन रूपी टर्म. सो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट के बाद भी 7.47 का रिटर्न है KSE 100 इंडेक्स का, which has clearly outperformed the MSCI Emerging Markets Index, which stands nearly 4%. So this slide is for those who are more interested in numbers and the graphical representation. और इसके बाद अगर आप देखें तो हमारा जो मैं अभी शरिया कंप्लाइंट आपको बता रहा था, we call it KMI 30. It's an index comprises of 30 comprises of Sharia compliant companies designed by Al Mizan. So it is Mizan index, which has produced much better returns, as you can see, 13% and 21%. 13% in US dollar terms and 21% in Pak Rupee. Again, MSCI का अगर आप रिटर्न देखें तो वो तकरीबन 4% के करीब है.
एक एलिमेंट और होता है डिविडेंड यील्ड, हमारे यहाँ होती है डिविडेंड यील्ड रेशियो, कि मैं कि अगर एक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ तो उसके ऊपर मुझे डिविडेंड मिलने का क्या प्रोपोर्शन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी मार्केट्स आपके सामने हैं। ये डेटा 30 जुलाई इस साल के एंड का है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान की जो मार्केट है that is producing the highest dividend yield as compared to most of the regional markets. And at the same time it is interesting to see जो लोग fundamental analysis से या जो equity analysis जो लोग करते हैं equities का, वो काफी familiar होते हैं इन multiples के साथ, जो कि मैं आपको next slide पे बता रहा हूँ, which is price to earnings ratio. So it is actually the price you pay for certain earnings the company is producing. So उसमें भी अगर आप देखें तो प्राइस टू अर्निंग में ये बिल्कुल ऑपोजिट होता है। प्राइस टू अर्निंग जितनी आपकी कम है, इसका मतलब है कि वो मार्केट उतनी ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो उसमें भी अगर आप देखें तो इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो रिटर्न्स हैं, इसको अगर आप इसकी प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स निकालें तो ये amongst the lowest हैं, actually the lowest in these markets which are there on the screen. I'm sorry. इसके बाद so this is the opportunity which is out there in the out there in the market, Pakistan Stock Exchange में. These are the kind of returns or the multiples the market is operating. और इसमें अगर आपको as a fresh entrant इसको समझना है, आप चाहते हैं कि इसमें and you want to stay at a lower risk category, so I think Sahulat account provides you, facilitates you to come on board in a seamless manner, trade with a limited, while carrying a limited amount of risk, and get yourself acquainted. अपने आप को, अपनी strategy को आप execute करें, market को समझें, long term investment करें, और उसके बाद जब आपको लगे कि आप काफी comfortable हैं normal low risk products के साथ, so then you can always decide to get into the normal category of accounts, जो हमारा नॉर्मल अकाउंट्स होते हैं, जिसमें आप कोई भी प्रोडक्ट ट्रेड कर सकते हैं, जितनी भी अवेलेबल हैं। उसमें लेवरेज प्रोडक्ट्स होती हैं, उसमें डेरिवेटिव्स के सूट्स हैं हमारे पास, तो वो आप बिल्कुल you can try them out. So I would simply end here, and if there is any if you have any questions, I'll be very happy to take it. And if I can answer, I will do. Otherwise, I would request you to leave your contact and we will get back to you. Thank you very much. So I think if there are no questions at the moment, please इसके बाद आप मज़ीद information अगर आपको चाहिए तो do visit PSX website, that is psx.com.pk, और आपकी कोई भी query हो तो वो आप info@psx.com.pk पे भेज सकते हैं, and we'll try to get you the answer. आप चाहें तो इस webinar का reference भी उसमें दे सकते हैं। अपनी कोई भी feedback, कोई भी suggestion हो, please do let us know, and stay safe and invest wisely.
using Sahulat digital account. Thank you very much. Assalamu alaikum.